Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of perimeter and area. This is 14th question of its exercise 11.3. So the question says that a circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? So हमें एरिया गिवन है एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन is equal to 314 मीटर स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314. सो 3.14 into radius square is equal to 314. सो डेसिमल में उठाएंगे तो अपॉन 100. 314 से 314 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r square is equal to 100. So r is equal to root over 100. Root 100 की वैल्यू जाएगी 10 meter. So a sprinkler can at the center of garden can cover an area that has a radius of 12 meter. So स्प्रिंकलर जो कि सेंटर में लगा हुआ है गार्डन के कवर करता है एरिया 12 मीटर रेडियस का, और हमारे सर्कुलर फ्लावर गार्डन की रेडियस है 10 मीटर. सो यस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. सो आंसर हो जाएगा यस. थैंक यू.